हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म पे हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टर्न पे हमने सॉलिनॉइड पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलिनॉइड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid. First of all, number of turns per unit length. सोलिनॉइड में यदि पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड विल बी ग्रेटर। Magnetic field inside this solenoid is B, and magnetic field inside here is B dash. Then B is less than B dash. Because of number of turns inside first solenoid is very less in comparison to second, तो magnetic field B में कम होगा, B dash में ज़्यादा होगा। Number of turns per unit length means you can say let capital N are the total number of turns in the length capital L. The number of turns per unit length, number of turns per unit length, N dash N small n will be equal to capital N upon. Second point is, if N is greater, magnetic field is greater. N is greater, magnetic field inside the solenoid is also greater. Now come to the second point. The second point is strength of current. Larger the current pass through the solenoid, then stronger will be the magnetic field. Larger the current pass through the solenoid, stronger will be the magnetic field. Third point is nature of core material used in making the solenoid. कोर मटेरियल में हम क्या यूज कर रहे हैं सॉलिनॉइड के अंदर? कोर मटेरियल मीन्स कि जो सॉलिनॉइड के जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें बीच में यदि हम कोई मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी रख दें, सॉफ्ट आयरन रखते हैं मान लिया, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द होलो सॉलिनॉइड. Fourth point is polarity of the phase depends on the direction of current. ये पहले भी बताया था आपको कि डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, polarity of the phase depends on the direction of current. At the left end, here the direction of current is anti-clockwise and north pole is generated, and here at the right hand side direction of current is clockwise, so south pole is created.
So we can say the polarity of the phase, polarity of the ends of the solenoid depends on the direction of current. यदि इसमें हम डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो राइट हैंड becomes north and left hand side becomes south. Now come to the next topic, electromagnet. When electric current is passed through an insulated copper wire wounded over an iron bar, इसको भी हम सोलिनॉइड की तरह से ही समझ सकते हैं कि किसी भी आयरन बार पर यदि हम कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड करते हैं, उनको एक तरीके से लपेटते हैं उसके ऊपर, देन मैग्नेटिक iron bar becomes magnetized. One end of iron bar becomes north and another becomes south. Let this is a iron bar and current is flowing from this end to the left end of this iron bar becomes north pole, right end becomes south. This is called electromagnet. When electric current is passed through an insulated copper wire wounded over an iron bar, the bar started behaving as a magnet. This magnet, this type of magnet is called electromagnet. Magnetic material attracts towards the magnetic material attracts towards it. The next point is strength of electromagnet depends on the following factors. Strength of electromagnet. First is number of turns and second factor is amount of current. Advantage of electromagnet over permanent magnet. It can be produced weak or strong. It can be produced in weak or strong form as we require, as per our requirement. While the magnetic field of bar magnet remains the same, it cannot be changed.